She doesn't need to be a hero, she was raised to be one. A very good evening to all of you. On behalf of Team Sarkari School.in and We Citizens Foundation, I, Harshada, And I, Sakshi. team members of Special Research Project on Girls' Leadership, along with Team Gudiya, welcome all of you. Today, we have gathered here on this very auspicious and significant day, the National Girl Child Day, where we want to celebrate our future female leaders with all of you people. Today's और आज event is going to be all about female leadership, its impact on shaping an individual, and of course, its significance. एंड आज हमने हमारे साथ कुछ ऐसे ही फीमेल लीडर्स को बुलाया है जो आज हम सभी के सामने इस लीडरशिप के विषय पर अपने अपने विचार रखेंगी. We welcome you all and now I would like to hand it over to Kanak ji. Thank you, Sakshi. Thank you so much. A very good evening to everyone. It is my pleasure to welcome you all today. Today, on the occasion of National Girl Child Day, the team of Sarkari School.in is gathered here to celebrate our own very female leaders. सरकारी स्कूल एक इनिशिएटिव है वी सिटीजन फाउंडेशन का जो हम यहाँ पर काम करते हैं टू क्रिएट ब्राइट फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया स्पेशली मार्जिनलाइज मेजोरिटी से बाय वर्किंग यूनाइटेडली विद ईगर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जो एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं. We give recognition to real life heroes who, despite the hardships and limited resources, continue to do their jobs with absolute grit and courage. Presently, Sarkari School.in proudly enlightens the nation about the government school which go above and beyond to come up with unique and innovative formats to make their students future ready. The platform works to promote a government friendly school narrative, putting spotlight on the positive aspects and considering policy matters. Sarkari School religiously organizes conferences and meetings to motivate and educate the people about the ongoing initiatives taking place in education sector in our country. क्योंकि आज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है और हम यहाँ पर अपने फीमेल लीडर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा एक अच्छा मौका मिलेगा रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ऑल दोज़ हू आर वर्किंग एट आवर ऑर्गनाइज़ेशन. इस समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सभी प्रोजेक्ट्स आर लेड बाय स्ट्रॉन्ग फीमेल इंडिविजुअल्स और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बोलते समय कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सभी को एक फीमेल लीडर लीड कर रही है. और मैं ये बताते वक़्त बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो रही हूँ व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स क्योंकि जितनी डेडिकेशन और ईगरनेस के साथ हमारी लीडर्स काम करती हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए शायद ही मैंने कहीं पे ऐसा होते हुए देखा है. Project Gudiya and Project Vedna under the organization solely work towards empowering girls in our nation. उसके अलावा बीट द टीम ऑफ सहयोग या फिर कहानी खोज या प्रोजेक्ट और गुड़िया की ही ले लें, हर एक प्रोजेक्ट मन लगा के अपना काम मान के इसे करता है. मैंने जब सरकारी स्कूल जॉइन करा था तो मैं सहयोग टीम के साथ जुड़ी थी और मैंने सहयोग टीम के साथ काम करके रियलाइज़ करा कि भले ही हम बहुत एक बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस छोटे से लेवल पे भी छ सभी की लाइफ़ में एक अलग चेंज लेकर आ रहे हैं और जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो उनके चेहरे पर हमें खुशी लेकर आ रहे हैं. तो उस खुशी को देखकर जो दिल में खुशी होती है, उसका कोई तोल नहीं हो सकता. और हमारा जो स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम यही काम करते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारे देश का फ्यूचर है, जो हमारी देश की बेटियाँ हैं, उनको एक लीडर के तरीके में फ़ॉर्म कर सकते हैं. और लीडर से मेरा मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि वो बड़े होके या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, लेकिन हमें उन्हें इस तरीके से तैयार करना कि वो एक सक्सेसफुल और एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ़ जी सकें. इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आज के अपनी चीफ स्पीकर गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी मुकुल मैम. मुकुल मैम मेरी मेंटर भी हैं, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आज उन्हें इधर इनवाइट करते हुए. Mukul ma'am holds a PhD in linguistics from University of Delhi.
She has a 22 years experience of teaching in the Bachelor's of Elementary Education program, first at Lady Sriram College and currently at Miranda House. Ma'am has been professionally associated with government organizations such as NCERT, NCTE, CBSE, and so on, and civil society organizations such as Eklavya, Ankur Society for Alternatives in Education, Organization for Early Literacy Promotion, etc. She has done several workshops for teachers of various kinds of government schools and private schools, and she strongly believes in bringing the subtleties and aesthetics of language in the discourse of education, in celebrating linguistic diversity of our classrooms, and in addressing the challenges posed by it. Her research interests include the position of languages in education, the discursive nature of Hindi, and politics of language in multilingual societies. She has several publications to her credit in the field of language education and linguistics. We welcome you, ma'am. Thank Thank you, you. Karak. Thank you so much. Now over to Harshita. Thank you, Kanakdi, for that lovely welcome. I would now like to invite Ritika from Project Gudiya, which is Project Gudiya is currently working in the field of girl child education. So over to you, Ritika. Hello everyone. Hope my screen and my voice is okay. Yes, you're completely fine. Please go ahead. Okay. Hello everyone. My name is Ritika Yadav and I'm doing sociology honors from Delhi University and I'm currently working in a project Gudiya as a team leader. Project with aims at increasing the enrollment of girls in the elementary and government schools by helping the institution build a safe learning classroom by spreading awareness. It is a project for a little girl child, innocent Gudiyas, who is not able to grab her right to education, sacrifice her dream because of narrow-minded thinking, myths, and the traditional prejudices against girls' education in Indian society. It also envisions to reduce the poor sex ratio in the classroom. Guess what? Today is a National Child Day, which is celebrated in India every year on 24th of January. It was initiated in around 2008 by Ministry of Women and Child Development and the Government of India to spread public awareness about inequality that girls face in Indian society. So, what you all guys think that why it was needed, by whom it is happening? So just let the social thing keep aside and discuss कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी क्यों है. Let us answer this question in only one line. Because of their independency, as the boy do. So education of girl is important for bringing a balance in society. Simply, since historical time, girls have been the subject matter of neglect, torture, and other horrific activities that cannot be ignored. There are many programs nowadays which have the objective educating the girl child holistically. But let us first think about why we are stressing the importance of education for girls only. This is because in most cases girls have been denied the chance of opportunity for an education. Why are we so unequal for the basic need, which is only education? Girls always face challenges all the time. There are many girls जिनको chance ही नहीं मिलता है पढ़ने को. और अगर किसी को मिल जाता है तो फिर आगे उनके पत्थर सड़क पे पत्थर बिछा दिए जाते हैं. They all face the struggle so much for education only. If I keep this thing in my mind of which is chances, so then I can proudly say that this organization Sarkari School is really unbiased to us. It provides us the opportunity with the platform to work on a basis on our potential, not the basis of our gender. Even if we don't know, we learn here without any struggle and any problem. Even the main thing is leadership quality. जैसे कनक ने भी बताया कि all the projects are leading by a girl. So we learn here and we lead our respective teams and everyone get a chance without judgment based on our gender. So that's the only thing we are expecting the same from the society. Please give your daughter the tools, space, and opportunity to continue learning in a safe arena. Help them to fulfill their dreams and realize their potential. So, to work against such prejudices, our organization Sakari School Project Gudiya functions where we provide the platform to everyone
Many girls are activities against little Gudiyas, and with this, our core motive is to provide the opportunity and motivate the girl to study. As we all know, the education is the most powerful weapon. We also organized an open mic event last week, and there were so many girls and even boys who were, convinced with this normality, who are concerned with this normality. I can truly say this thing that, please give it a chance and you will see a great result. And even we can see the result. There are many girls who are proud to their parents, teachers on a state level, or even the, whole India proud of them. So it's just about the chance and the belief. So just we only want a chance. Thank you so much. That's about today. Thank you so much, Ritika. That was, I mean, very well said that education is one of the most strongest weapons that is there, that exists. So thank you so much. Your team is working, doing well, working towards all these good causes. So thank you so much for coming here and speaking. Okay, now Marsha, an active member of this initiative, would tell a little about our special project. She is highly ambitious to work in the field of girl child education and equal rights for all. Please take over, Marsha. Greetings, everybody. I hope that I'm audible and visible. Yes, perfectly fine. Uh, I'm Marisha, and I feel so privileged to be the team member of this special research project under sarkarischool.com. So, today I feel so blessed to be speaking at this platform among so many eminent guests and speakers. But a lot of girls like me in our country can never get such opportunities. Leadership roles have always been dominated by men, and that is the sad reality of our country. न जाने कितनी लड़कियां हैं जो कभी अपना हुनर पहचान ही नहीं पाती हैं, अपने पापा, भाई और पति के सहारे वो जिंदगी गुजार देती हैं. Why is that so? Why are so many girls denied the development of a basic skill set, which is a basic right for everyone? Whenever a person is denied a basic human right, we fail as humans. This India is the same country that has given us women like Kalpana Chawla, Mother Teresa, Nirmala Sitaraman, Saina Nehwal, and so many such women. Then why is there that this exposure and opportunities of this extent is never given to all the girls? And if at all it is given, then they have to fight for it. बस यही gap bridge करना is our dream, because we at Special Research Project believe that every girl in our country has an undiscovered potential. She is not only impacting her family or society, but also the entire country as a whole. We are trying to culminate a wholesome, fruitful curriculum for young little minds like these to develop them the essential leadership skills. By leadership, I don't mean becoming a politician or being at a big position. I mean skills like creativity, decision making, communication, time management, stress management, teamwork, and many more such skills. वी हैव सीन कि आजकल बड़े होते हुए हम खुद रियलाइज करते हैं कि नंबर्स और लैंग्वेज की जितनी जानकारी ज़रूरी है हमारी लाइफ में, उतनी ही या फिर शायद उससे कुछ ज़्यादा ज़रूरी है ये बेसिक लाइफ स्किल्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ. We are researching on various perspectives that people have regarding women leadership in India. So we try to gather information from the view of a student and that of a teacher and identify the need, and then we try to fill in the gap. एंड सबसे प्यारी बात जैसे कि अभी सब कर ही रहे हैं कि हमारी टीम में भी सभी women curriculum makers हैं, and this actually deserves a round of applause. This curriculum will be circulated to various schools, and this way we will try to scale it and spread the cause. The curriculum will be student centric, where we do not spoon feed the students. उनको बताएंगे नहीं कि आप ऐसे लीडर बने and इसकी importance ये है, बल्कि we will try to make them learn these skills
via specially curated activities, reflective sessions, and fun filled interactions. Because what is learned through a personal experience at a young age is never forgotten. We really hope that our objective can be reached and we can touch, if not many, but a few lives. बिकॉज अच्छा काम करने अगर चलते हैं मंजिल की ओर तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है. The road to education is not easy for everyone. Especially for girls, this road is distorted and broken. While men get to travel the well built road of education with cars and buses, women struggle to mend the road for a lifetime. It is high time that we built this road for women's education. Today, about two-thirds of the worldwide population that lack basic literacy skills are women. Why are women being left out when it comes to education? Girls in our world face a variety of barriers from becoming educated, like conflict, war, violence, human trafficking, lack of access to safe water and medical health care, gender discrimination, child marriage, and whatnot. Today is National Girl Child Day. This day holds a special place in the calendar as this day is there to promote education, health, and basic rights for girl child. Girl child is a blessing to humanity and it is their right to live, study, and take whatever direction in life that they want. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, जहाँ उनको अपने भाई से कम आज़ादी और रिसोर्सेज मिलते थे, जहाँ उनको घर के काम सिखाए जाते थे क्योंकि पढ़ लिख कर क्या करना है. But the picture is changing with time, and we at Sarkari School are trying to do the same. What we are learning around the world is that if women are healthy and educated, their families will flourish. If women are free from violence, their families will flourish. If women have a chance to work and earn as full equal partners in the society, their families will flourish. And when families flourish, so do communities and the entire nation. This National Girl Child Day, let's work for educating a girl and changing the world. Not just her world, but the world that she lives in. Thank you so much. Thank you, Marisaji, for sharing your insightful perspective. Now, we would like to invite Abhi. She is a second-year psychology student from Kolkata, West Bengal, who is extremely passionate about imparting quality and holistic education across the community. She takes pride in the social research and aims at emancipation and empowerment through the social research. Over to you, Dee. Hello, everybody. I hope I'm audible. Yes, you are. Okay. Um, Good evening, everyone. I'm Adreja Dash. I am also a sociology major, and I am very passionate about women's education, and especially education in a holistic manner, and especially imparting education in the most marginal communities across India. It's my privilege to be able to speak here today and be in the presence of such eminent speakers and guests. Throughout history, Anonymous was a woman by Vivian Woolf. True power lies within knowledge and education. Ancient India was a land of enlightenment. It was a cascade of knowledge, faith, and spirituality, all coming together for basing the foundation of this great land. The Vedic age, as we know of, we witnessed intense debates and discussion where women shared the stage with men, as well as we must have heard of the most prominent ones, being Gargi and Maitri. Even though it was true for a selective few, the majority of women still were rendered invisible from public life. The prosperity of the Vedic age gave way to a long line of foreign invasions, crafting a different kind of history for Indian education. As culture began to shift, we witnessed women being rendered invisible from public spheres of life, a life of violence, and education being lost. Gender predominantly become supposition of discrimination, stereotypes, and violence.
The pre independence period, we have noticed some significant changes in the status of women's education, with the rigorous works of many social activists like Jyotiba Phule, Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, the Begums of Bhopal. We see the revival of education for girls. The literacy rate of women in the pre independence period was 8.86%. It rose to 65.46% in 2011. Not a great improvement, but it was a start. After independence, it became clear that education is a key to change the world and uplift every member of the society. The gap between the rates amongst men and women are decreasing in India as per the national census. But the question of girls' education in India encapsulates various shades of disparity, like enrollment of girls in primary and secondary education, high dropout rates, low percentage of women in STEM related fields. There are many stages of discrimination that many social organizations, along with the state and the central government, are combating. The government of India has undertaken various initiatives to ensure girls' education in the country. In the recent years, one of the most landmark initiatives by the central government is the Beti Bachao Beti Padhao initiative. It points to the crux of the issue of girls' education, the change in the mindset of the people. The sex ratio in the 2 years has crossed 950 females per thousand males with the initiative of Beti Bachao Beti Padhao, which is an improvement. Indian women make up to 43% of STEM-related fields graduation, which is higher than United States and Canada at 34 and 31% respectively. It has garnered a social movement aiming at upliftment of girls through education and building a strong foundation for equality amongst men, amongst economically marginalized sections of India. CBSE Uran scheme is also there that aims at increasing the enrollment of women in engineering and technical institutes. Recently, with the landmark judgment by the Supreme Court, women are now eligible to sit for the National Defense Academy examination. These schemes have made an impactful difference in the lives of many girls. At sarkarischool.in, through Project Gudiya, there has been many initiatives undertaken to increase the enrollment of girls in the primary and secondary schools, along with an attempt to increase and improve the sex ratio across this nation. Education is a basic human right. It is the most powerful weapon that many fear. Giving girls their rightful education is the crux of the development. There have been many initiatives by the government, but if we actually want to witness change, that must come from within. Even with so many policies, women are marginalized in many sections in India. The COVID 19 pandemic period showcases a disturbing trend in the sector of girls' education. The East Asia Forum reports that more than 50% dropouts during the pandemic period were girls. Just having right to education does not fundamentally cement girls' education. Even though women make up to about 43% of STEM graduates, their employability is just 14%. There are lacunas in implementation that gives rise to these kind of situations. It has been seen that crisis deepens disparity in girls' education. There are steps being taken to overturn this issue. The Commission of Women and Children in India is more active than ever to ensure equity in education. Education empowers women to be holistically independent, and India too aims at changing this and changing the status quo for a new dawn. It is challenging and we have a long way to go, but what remains true is our commitment for the future generation must encapsulate the very fact that we need to achieve 100% literacy when it comes to education to unleash the full potential of our nation's youth. Because you educate a man, you educate an individual, you educate a woman, you educate a family. Thank you so much. Thank you so much, Adruja. Thank you for highlighting the various programs of the government, that are there for promoting the girl child education. Thank you so much. Now, I would like to call upon Abhiniti. Abhiniti is currently pursuing economics honors from Sri Ram College of Commerce. She's an outspoken feminist, a passionate writer, an empathetic social worker, and a talkative introvert. She is currently a street artist in the Dramatic Society of her college, having held various leadership roles in diverse fields. Leadership and interpersonal skills is something she excels in naturally. She wishes to carve herself a career in research and wants to work in a think tank. So we welcome you, Abhiniti. You can go ahead. Thank you so much. Am I audible? Yes, you are.
Thank you so much, Harshita. Good evening, ladies and gentlemen. On the occasion of the National Girl Child Day, I will be talking about some landmark initiatives and programs of the government for promoting girl education. We all know India witnesses the highest number of female infanticides. According to a report of NCPCR released in 2018, 39.4% girls between 15 to 18 years of age are out of school, and 57% of girls drop out upon reaching the 11th grade. Not only this, 23 million girls drop out of school annually due to the lack of proper menstrual hygiene management facilities, which include availability of sanitary napkins and logical awareness of menstruation. The reason behind these figures can be the patriarchal social norms like child marriage, dowry, and restrictions on the mobility of girls. The expense of marriage and dowry in India is so high that girl child is often treated as a liability by their own parents. Even today, in underprivileged communities, most girls are taught household chores to become good wives rather than being sent to school. Safety and security of girls at school and communities is considered another reason. This is because they often experience issues of harassment on the way to school, violence, bullying, and other discriminatory practices. The shortage of secondary schools in the country means that girls have to travel vast distances to avail education, heightening the risk of sexual violence and abduction, often discouraging the parents from sending their girls to schools. Some other reasons include the lack of conducive infrastructure like separate functional toilets, poor quality of education, lack of women teachers, poor linkages to upper primary schools, curriculum that is not gender responsive, and many more. This often compels girls to either leave school or fail the desired learning competencies. To tackle some of the above problems, the government has launched some initiatives and programs. The Sabla scheme was launched in 2011, which aimed at improving health conditions for adolescent girls with menstrual hygiene as an important component. 2 years later, under the then ongoing Nirmal Bharat Abhiyan, focus on menstrual hygiene was added as a key component of the sanitation mission. Not only this, in 2014, the Union government launched the Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram, which aimed at improving the health and hygiene of an estimated 243 million adolescents, and menstrual hygiene was also included as an integral part of the program. Another program launched by the government in 2015 was the Sukanya Sampradhi Yojana, with the motive to promote the welfare of girl child. This scheme encourages parents to invest and build funds for the future studies and marriage expenses of the girl child. Balika Samriddhi Yojana is another central government scheme to support girls in financially vulnerable societies, sections of the society. This scheme ensures the enrollment and retention of girl child in primary and secondary schools. It aims at the prosperity of the girl child and provides them with better quality education. Beti Bachao, Beti Padhao is the most popular schemes under these programs. Many schools and universities endorse this scheme under different means. Some universities, in order to support the enrollment of students for higher studies, apply fee concessions on the registration and admission of female students. This scheme celebrates girl child, literally translating to save the girl child, educate the girl child. It believes in women empowerment and encourages to adapt an inclusive ecosystem for the same. This scheme also aims to promote girl child safety before and after they are born and discourages the practice of female feticides. Some other initiatives launched by the government are the CBSE Uran, which aims to increase the girl enrollments in prestigious engineering and technical colleges across India, and definitely the national scheme of incentive for the girls' secondary education, encouraging girls to pursue secondary education. So, the government has introduced schemes not only in the education sector but also in other sectors to promote the overall growth and development of the girl child. These initiatives are being introduced pan India to make them a success and contribute towards increasing the female literacy of the country, thus promoting girl education. Thank you. Thank you, Abhiniti. Thank you for telling us about the various schemes that exist. Well, people, when women thrive, all society benefits.
So, speaking of the significance of this Girl Child Day, today's event would not be complete if we do not remember one of the greatest feminist leaders of our country, Miss Kamala Bhasin, an Indian developmental feminist, poet, author, and social activist. Today's event is also a tribute to her spirit and journey throughout. We cannot forget her immense contributions to this world in empowering females. And thus, today, in her memory, when we are celebrating all these young female leaders, we would like to present in front of you all a very beautiful poem that was written by her, which whose title is "Kyunki Main Ladki Thi." क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। सपनों में उड़ान भरनी है, इसलिए पढ़ना है। ज्ञान को नई रोशनी देनी है, इसलिए पढ़ना है। अपनी लड़ाई लड़नी है, इसीलिए पढ़ना है। कोई नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं, इसलिए पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे इसलिए पढ़ना है, कमियों को दूर करना है इसलिए पढ़ना है, आज़ादी को जीना है इसीलिए पढ़ना है, निराशा से लड़ना भी है इसलिए पढ़ना है, मुझे एक प्रेरणा बनना है इसीलिए पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। मुझे पुरुषों की हिंसा से लड़ना है। अपनी खामोशी को खत्म करना है, इसलिए पढ़ना है। मुझे सामाजिक व्यवस्था को बदलना है, इसलिए पढ़ना है। मुझे समाज के पदक्रम को हटाना है, इसीलिए पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे गलत से सही को समझना है इसीलिए पढ़ना है, मुझे धर्मों को बदलना है इसीलिए पढ़ना है, मुझे एक बुलंद आवाज बनना है इसलिए पढ़ना है, मुझे नारीवादी का गाना लिखना है इसीलिए पढ़ना है, जहाँ लड़की का अस्तित्व हो ऐसी दुनिया का निर्माण करना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। Well, we don't think we will ever be able to do justice to the way Miss Kamala ma'am recited this, but still we Exactly. tried. हमने Yeah. थोड़ी सी कोशिश करी, तो thank you so much. मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सही टाइम नहीं हो सकता to invite our today's special guest for this evening, Dr. Mukul Priyadashini ma'am. Ma'am, it would be a great honor to hear from you about your views on leadership and importance in girls' life. Over to you, ma'am. थैंक यू कनक, थैंक यू सो मच। आप सबका इस खास प्रोग्राम में, आयोजन में स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फोरम पर आके आप लोगों की बात सुनने में। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने कमला भसीन को याद किया। कमला भसीन, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कि बहुत ही प्रसिद्ध फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, पोइटेस, राइटर थीं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लड़कियों की आज़ादी, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए एक मशाल उठाए रखी और बहुत से लोगों के लिए वो मिसाल साबित हुई। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी बोले सब बहुत अच्छा बोले, अलग-अलग एस्पेक्ट्स को लेके सबने अपनी-अपनी बात रखी। आई रियली अप्रिशिएट दैट, द वे यू केम अप विद डिफरेंट एंगल्स टू द whole concept of girls leadership. Let's first try to see what do we mean by leadership. लीडरशिप से हमारा क्या मायने हैं, किसे हम कहेंगे लीडरशिप? क्या लीडरशिप वही हुई कि हम आगे आगे रहे हैं और हमारे पीछे पीछे लोग चले, या लीडरशिप उससे आगे भी जाके कुछ है? एक बार को अगर हम सोच के देखें तो कहीं ना कहीं लीडरशिप में एक हायरार्की भी छुपी होती है, लेकिन सही मायने में लीडरशिप जो है वो हायरार्की से मुक्त होनी चाहिए। अच्छा लीडर, असली लीडर वो है जो किसी किस्म की हायरार्की को बनाए बिना, उसको तोड़कर, और फिर जो है अपने आसपास के लोगों को लीड कर सके। उन्हें क्या, तो लीडरशिप से क्या मतलब है हमारा? क्या ये सिर्फ
गाइडेंस, सपोर्ट एंड बाय वे ऑफ दैट एम्पावरमेंट है, या और भी कुछ है? देखा जाए तो लीडरशिप के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हम कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, यहाँ पर लड़कियों की चूंकि बात हो रही है, ऐसी जो थोड़ा सा मार्जिन में है किसी न किसी वजह से, जो कि आगे बढ़ के नहीं आ पा रही हैं, उनको हम गाइड करें, सपोर्ट करें, मदद करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उनके आसपास के लोगों को समझाएं ताकि वो अपने अपने सीमित दायरे से बाहर निकल के जो कुछ करना है ज़िंदगी में कर सकें, पढ़ें और आगे बढ़ें। एक तो वो उसका लीडरशिप का एक ये पक्ष है, एस्पेक्ट है। देन देयर इज अनदर थिंग टू इट, आवर ओन एम्पावरमेंट, खुद का एम्पावरमेंट। तो लीडरशिप का मतलब को हम दो लेवल्स पर देख सकते हैं। एक तो ये कि औरों की मदद करना, उनको सपोर्ट करना, उनके लिए प्रोएक्टिवली कुछ इस तरह से करना कि वो एम्पावर्ड हो और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें। They have a mind of their own. They are able to decipher what is wrong and right. एंड वो ये देखें कि वो किस तरह से अपनी बेहतरी, अपने आसपास की बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकती हैं। अक्सर हम ये मानते हैं कि हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लड़कियों का आगे बढ़ना, लड़कियों का बाहर निकल के आना, लड़कियों की पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि वो पूरे देश, समाज, परिवार को संभालती हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा ध्यान दे के देखें तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू आ जाता है। दूसरी ओर कमला भसीन की जो कविता आप लोगों ने सुनाई, उसको अगर हम गौर करें, उसके शब्दों को, उसके बोल को देखें, तो यहाँ लड़कियों की खुद की भी अपनी इच्छा और इंस्पिरेशन, वो भी अपने आप में एक वैलिड रीज़न है। मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है, या मैं लड़की हूँ, मुझे भी आगे आके एक समाज में एक अपनी जगह बनानी है, मुझे भी काम करना है, नौकरी करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ने से औरों को तो फ़ायदा बिल्कुल होगा, परिवार को फ़ायदा होगा, लेकिन हम जब मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के संदर्भ में ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू कहीं नहीं आता है कि नहीं, उनका पढ़ना ज़रूरी है, उनके पढ़ने से परिवार में भी लोगों को फ़ायदा होगा, वो बेहतर काम कर सकेंगे, बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। फिर लड़कियों के लिए हम क्यों जस्टिफिकेशन दें? लड़कियां भी इस समाज की, इस देश की वैसी ही सिटीजन हैं जैसे कि पुरुष हैं। सो मेल, फीमेल, बॉयज, ऑल ऑफ देम आर इक्वल, सिटीजन दोनों हैं। तो एक सिटीजन जो है उसके लिए कुछ अधिकार है, तो दूसरे के लिए हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इससे भी हमें बच के चलना है कि नहीं, मतलब वो ठीक है, परिवार, समाज, वो सबको कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये भी अपने आप में ज़रूरी है कि मेरी इच्छाएं हैं, मैं पढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं दुनिया को जानूं, मैं अपने ज्ञान को फैलाऊं और उस बहाने से एम्पावर्ड हूँ। Language and knowledge, these two are the greatest source of empowerment, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और लीडरशिप का दोहरा रोल एक तरह से फिर हमारा हो जाता है। एक तो यह है कि हम खुद जो है अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर सकें कि हम अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह समझते हुए जहाँ ज़रूरी हो, घर में भी, बाहर सभी समाज में भी सकारात्मक किस्म की लड़ाई लड़ सके। और दूसरी ओर और लोगों के लिए भी जो थोड़ा हमारी तुलना में प्रिविलेज नहीं है उतने, और हाशिए पर है, मार्जिन पे है, उनके लिए भी वो लड़ाई लड़ सके। तो सही सही कॉजेज के लिए लड़ाई लड़ी जाए, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उस रोल में हम अपने यहाँ बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं, अलग अलग तबकों से आई लीडर्स को देखते हैं, और इस समय मेरे मन में बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि इस बात का हमें एहसास कराते हैं कि हाँ, असली लीडर क्या होता है। एक इस संदर्भ में शुरू में कनक ने जो एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात कही थी, और शायद मरीषा ने भी और लोगों ने भी इसको कहा था। लीडर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अच्छी पोजीशंस में पहुंच गए। लीडर का मतलब ये हुआ कि आप अपने दायरे में रहते हुए एम्पावर हो सके। और ये बिंदु जो है वो मुझे इस बिंदु ने एक स्कूल की याद दिलाई। एक स्कूल है उत्तराखंड में, कौसानी एक जगह है जहाँ सुमित्रानंदन पंत पैदा हुए थे। सो इन कौसानी देयर इज अ स्कूल कॉल्ड लक्ष्मी आश्रम. Lakshmi Ashram was started decades back by a Swedish woman
आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, तो उन्होंने वो स्कूल वहाँ पर वो इस्टेब्लिश किया था। मैं उस स्कूल में गई हूँ काफ़ी साल पहले, और बहुत अच्छा स्कूल है। किसी आप लोगों को ज़रूर कभी मौका लगे तो वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो है लड़कियों का वो स्कूल है, लक्ष्मी आश्रम, और गांधी जी की बुनियादी तालीम की तर्ज पर वो स्कूल चलता है। वो वही फिलॉसफी वो लोग फॉलो करते हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर पढ़ी लड़कियाँ जो हैं वो सारी दुनिया में फैलें और जाके अपना अलग अलग फील्ड्स में काम करें, वो भी करें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये है कि उस समाज में रह रही, उन आसपास के गांवों में, उस रीजन में रह रही लड़कियाँ, भले ही वो कहीं बाहर ना निकल पाए, लेकिन अपने दायरे में भी वो एम्पावर हो पाए, उनका सशक्तिकरण हो सके। और उसी उसी स्कूल से पढ़ी हुई जो लड़कियां हैं उनमें से एक जो है वो डायरेक्टर बन गई है, और बाकी कई और भी है जो वहाँ पढ़ा रही हैं। तो वो सही मायने में सक्सेस है कि आप भले ही उस गांव तक सीमित रह जाते हैं, भले ही आप वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए आपकी अपनी एक से है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, आप दूसरों से असहमत हो सकते हैं। तो लीडरशिप, मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों पहलू लीडरशिप के, ये हमें अपने जहन में लेके चलना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। मैं फिर से एक बार कहूँगी, एक तो सरकारी स्कूल .com के लिए भी मैं तारीफ करती हूँ। पहले भी मैंने इनका कार्यक्रम जो मिरांडा हाउस के साथ को होस्ट किया था वो अटेंड किया था। मैं खुद चूंकि सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, सो दैट्स व्हाई आई स्पेशली respect the kind of work that they are doing. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming today. And uh, आपने जो बोला वो बहुत मोटिवेटिंग था, वो बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग था। उस आई थिंक जो आपने बोला वो हमें हम सबको एक एक सही उसमें लीडरशिप का मतलब समझाता है। एंड आपने बहुत सही बात बोली, एंड वो मेरे दिमाग में अब बैठ गई है कि जब लड़कों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो लड़कियों को क्यों ज़रूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ या मैं इसीलिए पढ़ना चाहती हूँ। वो उनकी मर्ज़ी है, एंड दे कैन डू इट। एंड काफ़ी बार होता है कि लड़कियों को आई फील यू नो सहन करना सिखाया जाता है, जबकि लड़कों के साथ वो नहीं होता। तो एंड द थिंग दैट यू सेड कि आप जहाँ पे भी हैं आपकी एम्पावरमेंट, चाहे बेशक आप उसी जगह तक सीमित रहें, पर आपकी एम्पावरमेंट वहाँ पर रह के भी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हो रही है, सो इट इज़ वेल एंड गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सच ग्रेट वर्ड्स, एंड आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको मोटिवेशन मिला होगा। आई गॉट वेरी मोटिवेटेड, सो थैंक यू मैम। And Mukul ma'am is my teacher, and I would regret it so much if I do not take this chance in saying that she is the most conscious, hardworking person I have, like, teacher I have met. I will be very honest. So thank you, ma'am, for letting me be a part of this journey of yours. Thank you so much. इट्स माई प्लेजर टू बी हियर, और तुम सबको सुन के, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली फील प्राउड, सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर हियर। तो कुछ जो दिख पा रही हैं, दीपिका है, मरीशा तो बोली थी, कनक है, हर्षिता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाहर से जो जुड़े हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात है कि देश के दूसरे हिस्सों से भी सब लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। थैंक यू। थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. हम आशा करते हैं कि जो आपने बातें कही हैं उनको सुनकर हम सबको प्रेरणा मिलेगी, हम सोचेंगे हम सब इस बारे में, और सबको एक मोटिवेशन का जिसमें सोर्स बनेगा जो इस प्लेटफॉर्म पे इस फॉर्म में सब सुन रहे हैं। Now I would like to take a few moments to invite our panel speakers for the day. So we have with us Abha Singh. She's a corporal and a guardian subhead in NCC at Lady Shriram College. We welcome you. Over to you. Thank you so much, Sakshi. I hope I am audible. Yes, you are. Yes, sure. Okay. So thank you for having me today here. एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब बोलते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो शायद हमें उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि ये उनका राइट है, उन्हें ये ज़रूर मिलना चाहिए।
हमें ये किसी को, जैसा कि मैम ने अभी कहा, ये किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ये हमारा राइट है और ये हमारे पास होना चाहिए। आप सभी ने ये प्रोवर्ब सुनी होगी कि इफ यू एडुकेट अ गर्ल, यू एडुकेट द फ्यूचर। तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। The reasons are to reduce the gender inequality, the discrimination, to break the vicious cycle of poverty, and many more reasons like this कि हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है, सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्स सोच है उसको बदलना है, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर गर्ल्स को एजुकेशन मिलेगी तो वो अपने राइट्स को और अच्छे से समझ पाएंगी। ये जो राइट्स है वो शायद उन्हें बहुत पहले मिल गए होते अगर उन्हें सही समय पे सही ज्ञान हुआ होता तो। वो जो ज्ञान उन्हें उस समय नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से आज शायद जो कंडीशन है वुमेन की वो थोड़ी ज़्यादा खराब होती गई। पर हमें देखने को मिल रहा है कि निरंतर इस तरह से प्रयास हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं जिस वजह से जो गर्ल्स हैं वो बेहतर कर पा रही है अपने फील्ड में। अगर मैं बात करूँ कि इसको कंट्री को किस तरह से इससे हेल्प मिलती है, तो एक रिपोर्ट थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये कोटेड था कि एजुकेटिंग गर्ल्स हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ ब्रेकिंग पॉवर्टी साइकिल। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से अगर गर्ल्स को चांस मिलता है लेबर फोर्स ज्वाइन करने का, तो वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी अपना योगदान दे सकती है। Other than this, over the past 4 decades, the global increase in women education has prevented more than 4 million child deaths. ये इसलिए possible हो पाया because the mothers were educated, they knew what their child requires and at what time. तो इस तरीके से हमने लाइफ भी सेव करी। अगर एक कंट्री की बात करना चाहूँगी, वहाँ पर जो रिसर्चर्स थे वो HIV एड्स के जो इन्फेक्शन रेट थे वो कम होते जा रहे थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे कि इसका रीज़न क्या है। They found that the high levels of girls completing the secondary education were raising campaigns and spreading awareness about this. So here we can see the active role of girls across 18 of the 20 countries जिसमें चाइल्ड मैरिजेस होती है। वहां पर ये देखा जाता है कि मोर देन 6 टाइम्स ऐसी गर्ल्स जो कि एजुकेटेड नहीं है उनकी शादी कर दी जाती है, एंड द गर्ल्स विच आर एजुकेटेड आर लेस लाइकली टू मैरी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें डिपेंडेंट होके रहना है, हमें पढ़ना हमारे लिए खुद के लिए ज़रूरी है, ना कि सोसाइटी को दिखाने के लिए, ना किसी और को दिखाने के लिए। If we are educated, we have more say in the family, in the society as well. If I talk about कि गर्ल्स को लीडरशिप की क्वालिटीज कैसे मिलती हैं, तो एजुकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम जो क्वालिटीज हैं उनको गेन कर सकें। If a girl is educated, she can participate in the decision making and bring remarkable changes for the society as well. And of course, for the other girls. She can be a housewife, she can be a role model for everyone. She can be an officer, doctor, feminist, environmentalist, and everything she wants to be. एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हेन अ गर्ल विल बी एजुकेटेड सिंस अ चाइल्डहुड, शी विल डेवलप हर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग डिफरेंट थिंग्स। दैट विल बी अ feminist worldview. This view will enable men and women to free their minds of the patriarchal values and all the other practices, and at last will help them to build a world which will be free of dominance and other things like hierarchy, a world that will be truly human. Thank you. This was all. Thank you so much, Abha. Thank you. Go ahead, Sakshi. Am I audible? I hope I am audible. Okay, great. Okay, so thank you so much, Abha.
Now, I would like to invite Shubhi Jain. Shubhi Jain is a proud NSS member at Kalandi College, DU, and she would like to share her views. Please go ahead, Shubhi. Thank you, Harshita. And good afternoon, everyone, and all the respected panelists. I would like to thank Kanak and Abhishek sir and the Sarkari school team for having such a great panel discussion. And wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with you all and you all, the incredibly amazing women, Abha and Mukul Ma'am, and everyone. And especially today on the National Girl Child Day, when I was asked to give a speech here, I knew at the very moment that what I want to say, like, being my career oriented person myself, I know that education is very, very important. And, coming from a privileged family myself, I have always been told that education is utmost important thing in your life. It should be your primary priority and it is above all. And I remember my mother telling me that no matter who your father is, no matter who your brother is, no matter who's your husband gonna be, you need to be financially independent on your own. And there, that was my reason for education. Like, I want to stand up on myself, I want to work for myself. And but when I was thinking about giving a speech and all these reasons, I realized that I don't know why, but now all of a sudden these reasons are not enough for me, and I wasn't satisfied with them. So I even googled about it, that what are the reasons, why are we educating girls, how is education making her a leader. And I found somewhat same or similar reasons. Even the research says that the girls who are educated and get married on later part of their life, they have healthier families, they earn more salaries, they can help their families, and they can transform their lives, their family's life, basically the country on a whole, and society obviously, and then the world. For a fact, an educated woman has skills, information, self-confidence, and talent that makes her a better mother, a better employee, a better resident of this country, and eventually the better leader and the power to lead her own life. In simpler words, educating women will empower them, help in the growth of economy, help in the rise of the community. And I can go on and on about this, but then I realized that basically the right to education, the basic right by the way, which is being questioned and negotiated on the basis that what would she bring back to the world. Like, I agree to the fact that education is giving her confidence to face different kind of situation. It is making her self-sufficient to fulfill her own dreams and aspirations on her own, and doesn't depend on your parents or your partners, or it is giving them the power basically. But and yes, the educating girl child is giving several benefits to her as well as the world. But according to me, education means giving us the knowledge of the world around us. It basically helps us to know, to learn the way to question, like what is wrong, what is right, and it teaches us how to deal with the problems. It teaches us to learn the basic values. And if along the way of learning this right and this wrong, she is giving something to the world, that's the benefit and not the reason to educate her. For example, when we learn to eat, it's benefiting the body, of course, it's making us healthy. And if it's seen in a larger way, it is making the world healthy. But that's not the reason that why we are eating it. We are eating it, the primary reason of eating is to live. And when we eat, it would benefit, that is the secondary reasons. Today, when we are here discussing about the girl leadership, to explain my point even more, I want to talk about the girl who dared to go to school as a young teen, defied the Pakistan extremist and the violence that was going there, Malala Yousafzai. She became a global icon. She fight for the girls' education. She fight for the importance of girls' education. She
even became a great leader, a mentor, and the activist at just the age of 17. Malala is a leader because she, regardless of her age, gender, status, the conditions she was living in, she fought for the woman, and for the woman to be educated like everyone else. She showed bravery, she showed courage, she showed commitment. And I have the endless list of these female leaders who are now leading the world. And education definitely played a very important role in this scenario. And I agree with her. And I agree to all the facts. Even Malala Yousafzai once said, education is one of the blessings of life. And I agree with her. It sure is one of the blessings of life, like the ability to see, to eat, to hear, in every sense, because education is the sense to life. There is no reason to education. It is the sense which is important for every each and person out there. And yes, if a girl which is taught today is given education today, she become a great leader of tomorrow. Thank them, rather than showing them as a reason that if you will study you can become this. Definitely she can become this, but that's not her reason for education. Her reason for education is that she will enjoy the life, she will know what is right for her, she will know what is wrong for her. And that education is the basic sense, basic essence of life. So I would conclude by saying that when today's girls become great leaders of tomorrow, just thank them. Thank you so much. That was, I mean, thank you so much, Shubhi. आप बहुत ज़्यादा अच्छे points हमारे सामने लेके आए हैं. And very well said when you said that, that satisfaction level is unmatched when you are financially independent and you're earning, and all you're doing is not for your, like, somebody else. You're doing it for yourself, for that happiness that you get, in educating yourselves or in leading a good life. So thank you so much for bringing all these points in front of us. Okay, next up, we have Akansha Yadav. Now, Akansha Yadav is pursuing BTech Computer Science from lovely professional university, LPU. She's a public speaker. She is a published poet, a content writer as well, and she loves to be in hands of nature always. She's associated with different organizations in these domains, and yeah, she has a great voice, and her passions are high. We welcome you, Akansha. Please go ahead. Thank you so much, Harshita, for such an amazing introduction. A very good evening, respected Mukul ma'am and Abhishek sir, and all the speakers who are in front of me. So, today on the topic girls' leadership in school education. With the onset of Screen Word 2022, or it be of back to 2018, or to the history in 90s, girls' power proved the myth of not being good leaders many a times. But the fact is, are they have to prove it again and again? I guess no. Girls' leadership plays a very crucial role in school education today. Firstly, to eradicate the sense of stereotype mindset of people that girls are not good leaders, and the leadership is the ability which is handled by boys only. First of all, we have to eradicate this stereotype mindset of the people that boys are only one who can handle the house, who can bring the money for their family, and who can handle the leadership. And no, it's never like that. The word leadership not comes in the hand by looking onto these things, that who is strong, who is weak, or who is female, who is male. But leadership is that thing which comes under the confidence, the coordination, and many more skills. As Mukul ma'am said, that leadership is not only that we situated in some positions, it is the self confidence that we gain when we used to prove ourselves as a leader. I am working as a public speaker. I am a leader for many of the people. So I got that confidence, that feeling, that happiness, that is above all everything, that is above all money, that is above all the things that is above all money.
So it's like something that is self satisfaction I'm having. So today we all know that education is something which is very, very, very important. We should follow the things that girls should marry fast and these all things. But today the independency is something which is the power of any girl, any boy. To be very frank in my words, if we are having independency, we don't need a husband, a supporter, like that thing. But we are having independency, we can conquer everything. So today girls, those are starting in schools, they are not focused only on studies, they have many other skills. If we give them chances to go on to the leadership things, then they learn about that what is life, how they should focus on to the another level when they are going into the professions, and how they should manage the things there. If we give the chance of the leadership at that time in the school time, then they will get the confidence from there, that how we have to work on our professions. हमारे अंदर वो confidence आ जाता है कि हाँ, we have something, we can do it. That confidence of making ourselves is one of the very important thing that we should do at the initial days of school. So giving them leadership gives them a hands-on confidence, and they prove themselves, they just make their dreams more powerful at that time, and they conquer that all the difficulties. So I would like to conclude my part with the self-written poetry, that is, क्या लड़की होना पाप है? ये पाप नहीं, ये सोच तुम्हारी नाकाम है। लड़की होना तो गर्व और सम्मान की बात है। आंखों में तेज है सपनों का, मन में भरी उड़ान है। तुम मौका देकर तो देखो, हम में हिम्मत बेहिसाब है। अपने सपने सच करने का हौसला हमारे ही पास है। So in the future, there will be no female leaders, there will just be leaders. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Thank you. Ada, for your encouraging words. I hope कि everybody will like it. और जो आपने बोला उस पे सब थोड़ा गौर फरमाएंगे, because it's a national girl child day, तो I think कि सब अपना अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे. So now we would like to hand the stage over to Deepika Thakur. She's an ex-volunteer at Sarkari School and president of Department of Elementary Education from Miranda House. A philosopher who, apart from being in the field of education, finds interest in capturing details of the life, arts and crafts and reading, etc. We welcome you, ma'am. Hello everyone. I hope you and all your loved ones are keeping safe. Am I audible clearly? Yes, you are. I hope I am. Okay. So first of all, thank you to all of you जिन्होंने इतने अच्छे से पूरा इस concept को explain किया है. Like I have been there since the start, and मैं देख रही हूँ like किस तरीके से आप लोग पूरा इस program को लेके आए हो, एक एक चीज पूरी डिटेल में explain करी है. And now I'm thinking like I'm falling short of words because everything has been explained by all of you like in such a good manner. And I would like to appreciate the efforts of Akansha. Like your poem was very beautiful, and as she said, in the future we'll not have female leaders, we'll have leaders. Because if we are starting from now and we are kind of taking away gender from the idea of leadership, so whom we see as leaders, हम लीडर जब बोलते हैं तो हम इसमें फीमेल या मेल क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वी नो कि जो गर्ल्स है उनको अभी स्टेज देना बाकी है, उनको अभी वो पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी बाकी है. बिकॉज विद ग्रेट लीडरशिप स्किल्स कम्स द अथॉरिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जब भी किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए. अगर एक गर्ल को लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, लाइक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन प्लेस. आई सी माई मदर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल होम to manage it and to take care of all of us. So this is how I learn from her. Like मैं leadership कहाँ से सीख रही हूँ? I'm starting from my own home. उसके बाद first of all thank you for bringing Mukul ma'am to the stage. I'm like really honored to be sharing the stage with her, and the way she enlightened all of us by saying all those words.
दैट किस तरीके से एजुकेशन जो है एक विमेन को अपने आप को एजुकेट करने के लिए सिर्फ मतलब क्यों रीजन देना पड़ता है, लाइक व्हाई डू वी हैव टू, व्हाई शुड आई हैव टू गिव रीजन, लाइक आई एम ग्रेजुएटिंग, आई एम गोना ग्रेजुएट इन अ ईयर और टू, तो मैं क्यों अपने आप को रीजन दूं दैट मुझे क्यों फर्दर पढ़ना है, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स को क्यों रीजन दूं कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड if I'm responsible for myself, so I do not have to answer to anybody that why I want to get educated, and so does with the leadership. अगर हम girls को like starting from the school itself, like if we start giving them the responsibility that you have to come up to be a better person. आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना because you are a female, or if even if you are a male, or even if you are from other sexual identities, you do not have to study because you belong to this kind of category, but you have to study because you have to be independent, and you do not have anybody else to depend upon. It is only you who can put yourself together, because आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट लीडरशिप मीन्स टू मी. मेरे लिए लीडरशिप का मतलब ये है दैट इट इज ओनली यू हु कैन पुट योरसेल्फ फर्स्ट. अगर आपको किसी और की जरूरत पड़ती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ बेटर. अगर मैं अपने बारे में स्टार्ट करूँ, लाइक फ्रॉम वेयर आई गेन द एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप, I cannot say that it started from my school, because school may we give preference to a particular kind of students. If we see that this kind of student is taking part or is active, so we can say that okay, isko le lete hain, and next time we'll give opportunity to somebody else. But then this thing repeats. So we have to take students from the school itself. हमें बच्चों को school learning से ही start करना पड़ता है, school learning से ही start करना चाहिए, to give them the stage to work upon, being it a male or a female, because we have talked, like we have much talked about why female should come up in the sphere of leadership. बट अगर हम स्कूल में ही बाइफर्केशन कर दें कि बिकॉज ये लड़कियां हैं, लाइक लेट अस टेक अ कॉमन एग्जांपल. हम स्कूल में एक टीचर बोलती है या बोलता है कि ये लड़की है तो इसको लाइक गिव हर द चांस ना. why are you creating that kind of space? आप ऐसा स्पेस क्रिएट कर ही क्यों रहे हो जिसमें आप बोलो कि ये लड़की है तो इसको चांस दो. देयर यू हैव शोन, आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया ऑलरेडी वो एक सेंटेंस से. तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि यू आर क्रिएटिंग कमेंट्स ऑन पीपल on the basis of their gender, because these kind of things creates a lot of impact on their future learning and the way they come out to be an individual in the future self. So I think in the field of education, the teachers need to be more conscious of what kind of comments they are making on the students in their school life, because this creates kind of a big impact on their mentality and the way they think. If they are thinking कि ये लड़की है तो इसको मुझे इस तरीके से treat करना चाहिए. Obviously there are some rules and responsibilities of you towards other gender, but that doesn't mean that if a particular kind of gender is not being given that much power at the particular point of time in the society, so you are going to differentiate them on that basis. इसी वजह से I think we are given this stage to talk about these things because it is needed to be talked about. इसके अलावा अगर मैं leadership की बात करूँ, so you all people are here in front of me, and the way you have told things, you have presented things in front of all the live audience who's present here. So this is a leadership that we can see in all of us, in front of you, in front of me, in front of my mentors and teachers and fellow friends who all are present here. So this is the thing we want leadership in. We want us to present our point of views without any judgments. We do not want judgments even. If we are afraid of being judged, अगर हम अपने आप को इस वजह से सोसाइटी के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे कि हमें हमारी लोग हमें जज करेंगे. Obviously there are people who will judge you, obviously there are people who will try to put you down, but it is you who can like trust on yourself. And being like we all have talked about privilege right now, कि हम privilege किसको बोलते हैं और हम क्यों बोलते हैं कि हमें privilege मिलनी चाहिए या फिर इनको privilege मिली हुई है as another gender in the society. For example, if I talk about the male society, so why do we say that they are given privilege? And why do we have to say that women are not given privilege? So every time when we are coming in front of the society, why do we have to tell every time that we are females and we have to be given
kind of upliftment in the society. It is you who is going to create the space, who is going to create uplifting society. Because अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी responsibility बनती है to share my ideas and point of view. And if you are going in another stage, like for example, अगर आप किसी एक ऐसे स्टेज पे जा रहे हो जहाँ पे there are four people, टू आर मेल गेस्ट एंड टू आर फीमेल गेस्ट, अगर वहां पे भी इस तरीके से उनको डिफरेंशिएट करा जा रहा है, वी हैव सीन इन लाइक मेनी इंटरव्यूज और इन मेनी थिंग्स वेयर मेल गेस्ट्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस इवन बीइंग ऑन द सेम स्टेज. अगर सेम स्टेज पे चार लोग अवेलेबल है, दो फीमेल है एंड दो मेल है, still more privilege is given, more respect or more power is given to the male male person. So ये क्यों हो रहा है? Because women have to take their own stand. It is they who should and must take their own stand. उनके अलावा और कोई नहीं आने वाला उनका स्टैंड लेने के लिए. It is just the responsibility of the society to uplift them and not to drag them down. So this is the only message I want to give to the society or the people who are present here or might be seeing this thing afterwards, that if you cannot uplift her, just do not pull her down. Because the only thing that creates support is how you provide support towards her. अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आप कुछ बुरा भी मत बोलो. If you cannot support, do not drag people down. And be it a male or a female, it is the responsibility of you that how can you create a positive impact on the life of people. If you are kind of creating positive impact, well and good. If you cannot, just get out of the life of the person. That's all I can say. And thank you for having me here. It has been a great experience. I got to know much more than I used to. और जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, when I actually ask ourselves that, okay, why do I have to speak on this topic? Everybody knows about it. We talk about it. हम रोज इसके बारे में बात करते हैं. But when we actually kind of introspect, we try to like think कि हम हमें क्यों इस बारे में बात करनी है. Then we find more examples. Then we find more reasons towards it. Okay, because this thing is lacking, so we have to talk about this first. So this is all I want to say, and thank you for having me here. थैंक यू सो मच दीपिका दी, थैंक यू सो मच. सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको बहुत कुछ जानने को मिला. आई थिंक दीपिका दी हैज स्पोकन हर हार्ट आउट. शी इज आउट देयर एंड शी सेड ऑल द थिंग्स दैट शी बिलीव्स इन, and I'm so glad that she did. So thank you so much for saying all those words. Okay, so now thank you. I would like to thank all our speakers, all the panelists of today. We have some questions, so I'll just start, and any one of you can take up the question. It will be great. Okay, so the very first question is that what leadership qualities are required in a person, in a female, in your particular field. For example, if Deepika D is related to education, she is pursuing education, teaching, or Akansha is pursuing the public speaking skill set, and you all are involved in different skill sets in different basically areas. So what are the different leadership qualities that should be there in a person to excel in the field that you have right now? Please go ahead. Anybody can take it up. Should I start first? And if anybody wants to add on, they can just do that. Definitely. Okay, so whoever has this question, that how do you have to come up with leadership? First of all, the most important thing that is all around the internet right now is believe in yourself, and you actually have to do that. Like when you want to be a leader, I cannot say, and I do not want to say that I'm a leader, because what is the first perspective that comes in your mind when you say that that person is a leader? Maybe you can think that the person is dominating, that person is like trying to create their own space, they just want other people to follow them. But no, leadership is much more than that. Leadership is taking the person along with you to help them grow along with you. Like if I'm being a leader, if I'm responsible for a particular thing, for example, I'm the president of my department, so what is my responsibility being on that position? It is not just to do a particular kind of things that are listed to me, that you have to do all these things, but along with that, how can I put my own efforts and my own like past experiences in putting in the kind of uplifting my juniors,
and sharing my experience on that level. First of all, believe in yourself. The moment I started believing in myself, my friends, my colleagues, even my teachers and parents, they tried to put in that thing in my mind that okay, you can do it, and that's the only thing that is important. If you are like, if you want to be a leader, or if you want your friends or other people to be in that particular positive space, so the first thing you have to do it is believe in yourself and make them believe in themselves, because when things always go two way na, like if I'm kind of motivating you, so it is next time you'll also try to motivate me. It is always like when we kind of try to give positive energy to the person in front of me, then that person would also try to give pass on positive energies to me. This is how leadership has to go on with it. Second is, if you are taking up with your responsibilities, always try to assure yourself that you can do them. If you are lacking confidence in yourself that I cannot do this, or maybe if I'll do this, what kind of reactions would be of other people, बाकी लोग मुझे जज करेंगे, बाकी लोग बोलेंगे कि ओ ये इस पोजीशन पे आ गई है, या फिर इसको ये काम मिल गया है, तो शी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ अपने लिए बहुत ज्यादा एक हाई स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया है, या फिर शी इज नॉट टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. So always try to see this thing that if you are given a responsibility, do not have to think about what other people are going to think about you. If अगर तुम्हें वो काम पूरा करना है, you have to do that. If you are given responsibility, you have the authority, you have the power, plus you have the thing कि आपको उसके लिए answerable भी होना जरूरी है. If you follow these things, if you can go on with these things, so you are capable of being a leader. And the most important thing is your life should be led by you. That is where you stand as a kind of the most important part of your life, and इसी से तुम एक असली leader बनते हो when you lead your life yourself. Thank you. I agree, very well said. बहुत सारे लोग आते हैं, they try and influence our life, but at the end जो भी bear करना पड़ता है, जो भी results हमें झेलने पड़ते हैं, वो हमको at the end individually अपने level पे झेलने पड़ते हैं. So you know, it's the best option to always keep our lives to ourselves in our hands, and you know the power should be in our hands. So yeah, very well said. Thank you, Deepika Di. Anybody else who would like to In regard, add? in regard of a question, Harshita, I would like to, and Deepika, I would like to add, if you are a leader and you are leading, take your organization, take your team not as a workers, take your team and organization as a family, because that bond connect you and that family, that organization to yourself. And the way they connect themselves, no, at that time they share your things, like they can share your profession, they can share the professional things also. And sometimes some people need the personal things too, they want to Support. share, but exactly, oh, they want to share, but when, because जब तक वो चीजें family bond नहीं होंगी तब तक they will not share. If I talk about the best leader, I should say, for the Sarkari school, Abhishek sir was the amazing person and the best leader I had up till now. So and I want to add that is the very respectable person, the words of very respectable person, Mr. APJ Abdul Kalam sir. So he once said that अगर आपकी टीम का काम बुरा है तो लीडर पहले आएगा, और अगर आपकी टीम के लिए अच्छाई की बात है, लाइक दैट द अप्लॉजिंग थिंग्स, देन सबसे पहले टीम आएगी. So these words were very inspiring for a leader, and everyone should learn these words, that we have to go with the family, making of the family in an organization. And the second thing is, when it comes to the applauding things of the work of the team, then there should always be team comes first, and when there are hard times of an organization, of a team, then the leader should come first. So thank you so much. Great. Thank you, Kansha. Okay, so I think we have another question. So, you know, the question says that you know, in your particular field, what is the participation status? Basically, what is the like male to female ratio that exists in your field, the field that you're currently working in? Anybody who would like to take it up? Okay, I would like to answer this question.
So I am currently in NCC in my college, since it is a girls' college. So yeah, but when I went to camp and saw other cadets, I saw there were many girls who participated in NCC who are at different ranks, and they had confidence in them just because they were part of NCC. So yeah, they are participating in more and more numbers. Yeah, this was all I wanted to say. Thank you so much. I mean, that's a progressive sign. And I have personally seen, a lot of girls out there in NCC who are doing really great. Sakshi with us in our team, she is a part of NCC at LSR. So, I mean, it's a great thing. And I hope this participation from the girl, from all the females, it continues in, I think, every field, right? So, yeah. Okay, so, I guess I guess yeah, this Akanksha, ratio please. is increasing day by day. As per my own experience, I've been there an NCC BNC certificate holder, and as Abha said, this the NCC when we wear the NCC uniform, we had that confidence of leading. We have that confidence of yeah, we are someone. So in the NCC also there is the ratio is almost equal or above only. And in recent times only, I had been an announcer in All India Inter University Boxing Championship, and I was shocked at that time that not only boys and girls were so many numbers that the boxing championship for the women it took almost 7 days to complete when we were having 3 boxing rings. So the ratio is increasing day by day only. And I think the I mean, process like increasing ratio it is give a hope to other girls like वो भी देखते हैं कि अच्छा हमें एक और हमारे रोल मॉडल उनके रोल मॉडल्स बनते हैं so ना girls tend to think कि हमें भी पोजीशन पे आना है so they will took some initiative to get this position. So I think it is necessary not only in NCC or particularly in the field that Akansha has mentioned but also in every field की किस तरीके से अपने रोल मॉडल देखना फिर उसको देख के होप करना कि हम भी वहाँ पर हो तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. yeah, definitely. And I think रोल मॉडल जरूरी नहीं है कि कोई दूर के कुछ बड़े लोग ही हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं. I think it could be anybody from our neighborhood, like a teacher, a fellow friend. It could be anybody. और So अब I मदर think, yeah, exactly. I mean, she is. Yeah, for each one of us, she is. So yeah, I think that was a great response, Akansha, and from you also, Sakshi. Okay, so thank you, each one of you, for basically connecting with us. It was a very, very enlightening conversation. It was very insightful listening to your views and learning about your experiences, the various learnings that you had throughout this journey. It was amazing connecting with you on this special day, because this is, of course, a special day. It is the National Girl Child Day, and that is why we had that conversation. So, thank you for sharing your views. Okay, now I I would would like basically, to share something. Can I? please, Yeah, please go so ahead. like the first thing that we can say is like we say that we have to appreciate the people like whom we are surrounded with, the environment we live in. So the first thing when I felt very honored and happy when Kanak came to me and she asked me if I want to be a part of this panel. And I hope everybody who's present here, they must have felt very honored and proud when they were called upon the stage. So I would like to really thank Abhishek sir, who has always been a kind of supporting hand throughout this journey since I've been a part of Sarkari school. And thank you to all of you who has been like kind of supporting through your expressions, through the way you have been smiling all this all time. It was very motivating for me and really. So you can proceed with your thing. Thank you. Thank you, Deepika ji. Okay, so now I would basically like to invite Mr. Abhishek sir. He's here with us. He's the man behind SarkariSchool.in. He's the backbone. He's our team mentor. So yeah, he's the founder of SarkariSchool.in. He's an inspiration. He's in education sector. He's a professional having 9 years of experience. He was a Gandhi Fellow, and has worked with government primary schools on principal leadership, teacher motivation, and system transformation related projects in
Rajasthan, UP, Bihar. So sir works very hard, and we all know him. So yeah, sir, all yours. Please continue. थैंक यू थैंक यू सो मच हर्षिता. स्पेशली मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है मैं बता नहीं सकता. दीपिका को देखकर यहाँ पे, आकांक्षा को, कनक से तो मैं हमेशा इंस्पायर होता रहता हूँ. हमारी टीम के सारे लोग और शुभी और आभा, पहली बार मैं आपको सुन रहा हूँ. कितना पावरफुल स्पीच था. सो आई होप कि आप इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे. मुझे ज़्यादा आज कुछ बोलना नहीं है क्योंकि आज बहुत ही यूनिक सा माहौल है. एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक ऐसा दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं. और इससे ज़्यादा प्राउड क्या फील होगी कि हमारे सारे गर्ल्स आइकन यहाँ पे हैं और वो उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हम, मैं उसको डिबेटेबल टॉपिक नहीं मानता. क्योंकि सबने बोला है तो मेरा भी बोलने का मन कर रहा है. कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. आई होप कि शायद इसी पर्पस के साथ हम सब लोग अपने अपने लाइफ में, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है. बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको अपने लाइफ में रखना चाहिए और खास करके आज के दिन में तो उसको ज़रूर दोबारा से याद करने की ज़रूरत है. जो एक पहला चीज़ मुझे हमेशा एक फील होता रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. हालांकि कई बार मेरे पास शब्द नहीं मिलते कि हम कैसे एक्सप्रेस करें. मुझे लगता है चीजें वहीं से खराब होनी शुरू होती हैं कि जहां पे हम डिफरेंशिएट क्रिएट करना शुरू करते हैं. जब मैं पहली बार अपने लाइफ में स्कूल एजुकेशन में काम करने के लिए गया, सो मुझे अपना क्लासरूम तो याद था, बट जब मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ जब स्कूल में गया, पता चला कि क्लास 5वीं तक के बच्चों के बीच में भी वी आर हैविंग जेंडर डिवाइड. क्लास 1 के बच्चे, क्लास 2 के बच्चे भी एक अलग अलग बिठा के उनके साथ उसी तरीके का बातचीत चल रही है. थोड़ा तो बड़ा होने दो. दिमाग में यही आ रहा था, थोड़ा तो बड़ा होने दो, अभी तो बचपना है, खेलने दो ना, थोड़ा सा उनको साथ रहने दो ना, कुछ सीखने दो ना. हो सकता है बहुत सारी सोसाइटी में हम हर किसी को बहुत अच्छा मान नहीं सकते. आज के दिन में बहुत तरह के चैलेंजेस है, सिक्योरिटी का इश्यूज हैं, बहुत तरह के अजीब अजीब टाइप के लोग हैं सोसाइटी में. पता नहीं कौन कैसा किस सोच के साथ निकल जाए. बट मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे हमें सबको फोकस करना चाहिए आज गर्ल चाइल्ड डे के दिन में. अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे कुछ काम करें और शायद लीडरशिप का भी कंपोनेंट इससे कहीं ना कहीं चीज़ें, कि जैसे हम बार बार आपको चुप कराएंगे, बार बार आपको मना करेंगे, बार बार लकीर खींच देंगे, क्या करोगे आप? एक बच्चा बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको बार बार चुप करा दिया जा रहा है, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद वो बोलना बंद कर देगा. लीडरशिप के मामले में मुझे लगता है कि यहीं से चीजें, स्कूल के कैंपस से ही चीजें गड़बड़ हो रही है, हमारे घर से ही चीजें गड़बड़ हो रही है. किसी ने बहुत अच्छे से बोला कि लीडर का मतलब ये नहीं कि हम उसे पॉलिटिकल लीडर बनाना चाहते हैं. गर्ल्स लीडरशिप की बातें जब भी होती हैं तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे लोगों को शायद ज्यादा फ्रीडम मिलती है, ज्यादा उसको छूट मिलती है ना. और वहीं पे हम फील करते हैं और ये सब सब लोग विटनेस करते हैं कि बेटियों को, हम अपने घर में हमारी बहन है या कुछ और है तो उनको हम एक एक कहीं ना कहीं हम दायरा खींचने की कोशिश करते हैं. और ये दायरा में भी बहुत सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट से मैं उस सारे एस्पेक्ट्स को नहीं ले सकते, बट हमें लगता है कि हम सबको अपने दायरे में, हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम प्रोफेशनल है, एजुकेटर हैं, हम जिस किसी भी दायरे में रहते हैं, जिस किसी भी प्रोफेशन में है, हमें लगता है कि इस दायरे को एक कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आप गर्ल्स लीडरशिप के बारे में केवल भाषण देते रहेंगे. विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर चीज में, ये केवल भाषण की बातें हो जाएगी, पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा जब तक ये दायरा बनता रहेगा. और दायरा किन चीजों से बनती है, मैंने एक एग्जांपल शेयर किया. एक दूसरा दायरा जहां से बनती है, मैंने शायद ही इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ BHU को, कि जहाँ पे मुझे जेंडर एंड वुमेन स्टडीज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ध्यान में आया कि जाने अनजाने में हम अपनी वर्डिंग के थ्रू, अपनी लिटरेचर के थ्रू, अपने लिखने की जो हमारी शैली है, या जो हम एक कहते हैं ना कि स्टीरियोटाइपिंग है, उसकी वजह से हम कितना नुकसान पहुंचाते हैं. मुझे याद है तब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था. मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट में, अब शायद कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, कि पहले जो भी डॉक्यूमेंट तो मतलब जाता है तो जाति है क्यों नहीं हो सकता, है ना. जेंडर
वर्ड्स क्यों नहीं यूज हो सकते? क्यों नहीं हम कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जिससे हर कम्युनिटी को ऐसा फील हो कि समहाउ आई एम फीलिंग कनेक्टेड। कम से कम दो जो, मैं सारे कम्युनिटी को, ये हम उसमें लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन की बातें हम नहीं कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगा। बट क्या उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय एक बेटी और एक बेटा दोनों फील कर सकता है क्या कि ये मेरे लिए है? तो लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा असर होता है, और हमारी पढ़ाई में, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे सोसाइटी में। और ये भी एक कहीं ना कहीं हमें चीजों को, जैसे आजकल ये कोई बताने वाली बातें नहीं है कि चाहे वो खेलने कूदने की बातें हो या प्रोफेशन चुनने की बातें हो, या हर चीज में कुछ ना कुछ, ये लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो हमें चीजों को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे नजर आती है। तीसरा, मुझे जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी वाइफ को सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही हॉलिस्टिक और बहुत ही एक ऐसा स्पेस बनाने की कोशिश, मुझे याद है कि जब हम दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे पिछले साल, तो हमें हमेशा ये फील हो रहा था कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हम अपनी हमारी मेंटल हेल्थ सही है। तो हमें ध्यान में आया कि हमारी टीम में ऐसे लोग, रात में 9:30 9:45 के आसपास में एक कॉल आया, एक दूर दराज के इंदौर के पास एक गांव है, वहां पे एक वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ के काम कर रही थी। उसने फोन करके के बोला कि सर आप टेंशन मत लेना, ठीक हो जाओगे, है ना। एक केयरिंग वाला वर्ड। फिर ध्यान में आया, मैं उसके बारे में हमेशा बोलता है ये ना, ये बहुत अच्छी राइटर है बट इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या कुछ सीखने को मिल सकता है क्या? क्या कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल होता है, मैं कई बार डरता हूँ, कई बार पता नहीं बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म, मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों में हमने खास करके टियर 2 टियर 3 सिटीज के गांवों के भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, और उन्होंने कुछ कुछ ना कुछ सीखा है। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि तुम डेयर डेविल की तरह कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा करके उनको लीडर बनाते हो जिनका कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा भी अपना पर्सनल कमेंट यही होता है कि लाइफ में कोई लीडर बन के पैदा नहीं होता। क्या हम मौका देते हैं क्या? बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बट यहाँ पे 2-3 लोग एग्जाम्पल है, खास करके आकांक्षा एग्जाम्पल है। आकांक्षा जब आई थी टीम में तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक राइटर की तरह आई थी। बट जब एक टीम लीडर, एक हमने प्रपोजल किया कि आकांक्षा क्या आप टीम को लीड कर सकते हैं क्या, और आकांक्षा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, और मुझे लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस तरीके से एक प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ, ये प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं पाते किसी को। तो मुझे जो जो एक जो मेरा मेजर पॉइंट है वो ये है कि ट्रस्ट करो लोगों पे, भरोसा करो, स्किल गैप है भी तो भी भरोसा करो, उसको मौका दो, मौका, एडिशनल मौका दो, कोशिश करो कि उसको एक अवसर मिले, अपने को प्रूव करने के लिए नहीं, कुछ नया करने के लिए उसको एक अवसर दोगे ना, तो वो अपने को चैलेंज कर पाए। और इस मामले में जस्ट इमेजिन कि वो, मैं गांव का एग्जांपल नहीं, मैं शहरों का भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी, दिल्ली में भी रहने वाले बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी एज अ कॉमन वॉलंटियर, और नाउ दे आर लीडिंग 15 20 50 100 वॉलंटियर्स। सो ये कैसे संभव होता है? ये जस्ट संभव होता है इसलिए कि भरोसा करने से। ये भरोसा किसी पर भी इंसान पे करेंगे तो होगा। हमें लगता है कि ट्रस्ट में, यहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत स्टीरियोटाइपिंग है। मैं खुद, अगेन, मैं उसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ जो भरोसा करने में थोड़ा हिचकता है, और हम भी कुछ ना कुछ ऐसे चीजें बनाते हैं सोसाइटी में, कुछ चीजें ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर देते हैं जहां पे ये भरोसा टूटता भी है। सो मुझे तीसरा जो वर्ड था जो मैं यूज करना चाह रहा था कि अगर हम ट्रस्ट करेंगे, लीडरशिप को अगर प्रमोट करना चाहते हैं स्कूलों में भी, मैंने देखा है, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहता हूँ कि बनारस में एक स्कूल है एयरपोर्ट के पास ही, सैरा गोपालपुर। मैंने उस स्कूल की जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है। क्लास 5 तक का वो स्कूल है, एंड यू कैन इमेजिन कि उस स्कूल में ज्यादातर जो वहां पे जो चाइल्ड कैबिनेट है वो बच्चे सारा कुछ संभालते हैं, एंड मैक्सिमम बेटियां हैं, मैक्सिमम गर्ल्स हैं। उनका बैकग्राउंड कोई, दे आर नॉट फ्रॉम हाईली इन्फ्लुएंशियल फैमिली, या क्या उनका सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया वहां पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको एक अच्छा मौका मिला, दे आर डूइंग वंडर्स। और कभी आप उनके चीजों को देखोगे तो जो हमारे सहयोग सीनियर टीम के लोग हैं अभी उनके बच्चों के साथ
विंटर कैंप के थ्रू कनेक्टेड है, दे कैन सी कि कैसे वो बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ compete कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका हुलिया, उनका बोलने की शैली शायद वो डिफरेंट हो। तो अगेन वो भरोसा करना बच्चों पर कि बच्चे कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, ये भरोसे का रीएस्टैब्लिश करना जरूरी है। इसलिए दीपिका, कल के दिन में आप टीचर बनेंगी, साक्षी आप कुछ करने वाली, सब लोग कुछ ना कुछ करने वाले। हमें अपने जैसे लोगों को भरोसा करके मौका देना चाहिए। आपको धोखे भी मिलेंगे, आपको विफलता भी मिलेगी, आपको हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी, बट अगर ये भरोसा का सेंस नहीं रहा ना, तो वी कैन नेवर वर्क ऑन गर्ल्स लीडरशिप थिंग। और ये बहुत जरूरी है माइंडसेट में लाना। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है करने की, नीड है, जैसे कमला भसीन जी की कविता को सुनाया ना आपने, कि हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि मेरा पढ़ना जरूरी है ना, बल्कि इसलिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, तो शायद जो इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी पे वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम सबको, मैंने एक विटनेस किया है अपने लाइफ में कि हम जो लोग पढ़े लिखे कम्युनिटी है, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो कई बार सोसाइटी को हम भी अपने नजरिए से देखते हैं। तो हम अपने नजरिए से ना देखकर उस पर्सन के नजरिए से देखने की कोशिश करें कि जो उस सराउंडिंग से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप अपने लाइफ में किसी बैकवर्ड ब्लॉक के किसी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विजिट करिए। कस्तूरबा गांधी स्कूल, वहां पे कौन बच्चे पढ़ते हैं? वहां पे ड्रॉप आउट बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे बच्चियां पढ़ती, केवल गर्ल्स का वो स्कूल है। और वहां पे जो डिसेबल्ड हैं, या फिर जिनके माता पिता नहीं है, या जिनके घर की बहुत सोशल बैकवर्डनेस है, ऐसे लोग पढ़ते हैं। अगर आप किसी कस्तूरबा गांधी के बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में एजुकेशन का मीनिंग क्या है और वो कितना पैशनेट है। क्या हम सब लीडरशिप की बातें करते हैं ना, लीडरशिप जैसे किसी ने मैं फिर से कि उन बच्चों में एक चीज है, एक चीज चाहिए बस उनको, वो है कॉन्फिडेंस अपने शब्दों पे, अपने अपने सपनों पे, अपने क्या बोलते हैं, उनकी हिम्मत का एक उनका उनका जो कुछ करने का जो जज्बा है ना, जस्ट केवल कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगी? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी उनको जब हम, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंगेज होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। लेफ्ट आउट फील करेंगे तो शायद नहीं होगा। तो हम कई बार जाने अनजाने में केवल उनकी सोचते रह जाते हैं कि जो शायद जिनके पास प्रिविलेज्ड हैं या जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए हम कितना कर पाते हैं। और अगर हम उनको करें, उनको मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं, आप देखोगे कि वो बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। मुझे लगता है आज के दिन में आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग अपने अपने फील्ड के लीडर बनने वाले हैं। और जब जब आपको मौका मिले तो आप किसी पे भरोसा करिए, किसी के कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए, किसी को सपोर्ट करिए, है ना। और उन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करिए अपने लेवल पे, जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करते हैं। सो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तभी शायद ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का कुछ एक मीनिंगफुल आउटकम आ पाएगा। और मैं लास्ट में केवल 2 बातें कि हमारे देश में अभी भी एजुकेशन के हिसाब से सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। सो वी नीड मोर एंड मोर प्रोजेक्ट लाइक गुड़िया, वी नीड मोर एंड मोर प्रोजेक्ट लाइक स्पेशल रिसर्च जिस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाए। 21st सेंचुरी स्किल्स में भी अगर कोई आज बेटी नहीं पढ़ रही है तो हमें हमें लगता है कि ये नेशनल शर्म का विषय है ना, नेशनल लेवल का। और आज भी इंडिया में अगर सेकेंडरी लेवल पे देखोगे तो 81% केवल परसेंटेज हैं, लगभग आज भी 20% के आसपास में बेटियां ड्रॉप आउट हो जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम सब कुछ ना कुछ छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, छोटी छोटी बातें, 2-4 लोगों को भी अगर उनके मन को बदल दिया, उनको कुछ करने की इंस्पिरेशन दे दी, तो शायद हम एक बड़ा इम्पैक्ट दे पाएंगे। तो मेरे लिए तो आप सब लोग ही मेरे इंस्पिरेशन हो, आप सब से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। और मुझे लगता है कि आप सब ऐसे ही मोटिवेट, ऐसे ही इंस्पायर, ऐसे ही दूसरों के लिए भी कुछ सोचना है, ऐसा करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, है ना, अच्छा ही होगा।
घर बैठ के सोचने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ करने से होगा। So thank you हर्षिता, thank you कनक, invite करने के लिए। थैंक यू अभिषेक सर। आई मीन आपने ही मौका दिया है आज टू लीड दिस प्रोजेक्ट, टू लीड दिस आई मीन दिस कॉन्फ्रेंस दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। तो आपसे ही सीखा है मतलब, एंड इसको ध्यान में रखेंगे कि सबको मौका देना ज़रूरी है, भरोसा करना ज़रूरी है, तभी कुछ होगा। सो थैंक यू सो मच। कनिका, यू कैन टेक अहेड फ्रॉम हियर। Thank you, Harshita Di. So, I want to say something first. मैं सत्य हूँ, मैं श्री हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मेरे देश का भविष्य हूँ। बेटियों का पढ़ना जरूरी है क्योंकि बेटियों का आगे बढ़ना देश के लिए जरूरी है। And with this, we are turning towards the end of our event, and I would like to thank everyone to grace us with your presence on the behalf of sarkarischool.in and We Citizen Foundation. I really incline to thank our special guest, Mukul Ma'am, for enlightening us with her thoughts on hierarchy-free leadership and self-empowerment of women. I also want to thank our discussion participants in today's world, girl leaders, for raising the issues of leadership and girls' education and shedding light over the views of the society. With this, thank you for telling us the steps taken by government for the development of women in present society. Along with this, I would like to show my gratitude towards the diligent and hardworking team members of Project Gudiya and Project Special Research. Last but not the least, Abhishek sir, thank you for supporting and providing us this great opportunity. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। इन लास्ट जस्ट एक छोटा सा वीडियो है, हम देखकर फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओके Is it audible? Every child has the right to learn and get an education, irrespective of their gender, where they live, and their circumstances. In our society, girls are often marginalized. Girls are 4 times more likely to be out of school than boys of the same background. बेटी है वो, मौका उसे दो पढ़ने का, यूं बचपन से उससे कागज कलम मत छीनो तो। बेटी है वो, उसे आसमान छूने तो दो, जो मौका तुम दो उसे वो हद से गुजर जाएगी। आसमान तो क्या, वो तारे भी तोड़ लाए। Thank you. Justice. We need to educate these primary educators of society because this feminine force can provide true meaning to the definition of Shakti in the contemporary times. There are few lines written by me dedicated to this Shakti. अड़ी हूँ लड़ी हूँ अभी तक खड़ी हूँ, ज्वालामुखी मैं कहाँ फुलझड़ी हूँ, सुन लो जमाने के मजलूम लोगों, तुम्हारे लिए न्याय की मैं खड़ी हूँ। Thank you. We are living in the age when women are having great opportunity in social public life and administration. In the words of Dr. Radhakrishnan, society requires women of restrained mind and discipline there are more and more educated people in a country, that country is definitely going to benefit economically, socially, politically, etc. Secondly, there are lots and lots of girls who are not allowed to go to school, and this definitely has an impact on their mental health because they might fall into depression. सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला लिटरेसी रेट इंक्रीज होना, दूसरा एराडिकेट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तीसरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, चौथा थ्राइविंग ऑफ बेबी,
5th sage sex and 6th later marriage. बिकॉज ये सारी चीज़ें इन सब के रिलेटेड लॉज हमारे देश में हैं और उन पे लागू होने के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ भी हैं, लेकिन लोग कितना इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, लोग कितनी चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा ही नेचर अपने देखने का हक सबके पास है, तो उन सपनों को पूरा करने का हक सिर्फ लड़कों के पास है। अगर हम एक बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम ये चीज़ प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो सपनों की दुनिया उन्होंने अपने लिए सजाई है वो एक काल्पनिक दुनिया ही है और वो हकीकत में नहीं बदल सकती। मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कियां बाय बर्थ लीडर होती हैं। लीडरशिप क्वालिटी लड़कियों में इनबिल्ट होती है क्योंकि पूरी जिंदगी में लड़कियां इतने अलग अलग तरीके के किरदार निभाती हैं। तो अगर हम एक लीडर को पढ़ने से रोक रहे हैं तो हम उसके अंदर का आत्मविश्वास गिरा देती है। शिक्षा लड़कियों की स्वतंत्र सोच को आकार देने में मदद करता है ताकि वह अपने जीवन का निर्णय अपने दम पर ले सके और सही और गलत के बीच अंतर कर सके, ताकि वह सामाजिक विकास में योगदान कर सके। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। Education is a necessity for every single human being in the society. It helps a person study new things with skills and learn about the facts of the world. Education plays an important role in the protection of women's rights. It helps to prevent gender discrimination and even increases productivity at their workplaces. An educated woman has skills, information, talent, and self-confidence that makes her a better version of every role she plays in her life, be it of a housemaid or an employee. Thank you so much, everyone. दैट वाज अ रियली बहुत ही इमोशनल वीडियो थी और मैं इसी नोट पे सबका थैंक करना चाहूँगी, सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर सेलिब्रेटिंग आवर फीमेल लीडर्स। और आप सभी से बातें करके बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा आज का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।